Thank you very much, Asim, for that introduction. I'd like to thank both the guests, Mohammad Ali Saab, who traveled especially for this event today, drove this morning from Islamabad to Lahore, and always always like before, made an outstanding presentation. He's a great salesman and a great leader as well. So at the same time, you need to be a bit careful when he's selling something. So, and Abdurrahman Waraich, a dear friend, a regulator, an amazing person as well. So I'm going to start with a few questions from our privatization advisor, Mohammad Ali Saab. And you also have the option of sending in your questions. The instructions are there. The instruction card is there on your tables. Just need to go to the website Slido and then send in your question after putting in the event code of CFA. So Mohammad Ali Saab, you've explained the vision, the objective about the privatization program, and the transaction that you'll be bringing to the market in the near future and over the long term as well. So what kind of, you're already conducting roadshows within Pakistan and outside Pakistan as well. So what kind of investor interest are you seeing in the privatization transactions? Is it primarily local investors, or you're seeing some foreign interest as well? I think to begin with, it'll be primarily local investors, because I think their understanding of these assets is there, the local liquidity is there, but the lead will be taken by the local investors, or interest भी locals में ज़्यादा होगा इस वक्त. But what we are seeing is, for example, PIA में local consortiums are talking to different international entities and they're bringing some technical partners with them. तो वहाँ पर थोड़ा सा वो आएगा इंटरेस्ट. अनफॉर्चुनेटली दो चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से इस वक्त आई थिंक इंटरनेशनल इन्वेस्टर बहुत कम आएंगे प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम में. एटलीस्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI वगैरह तो हो रही है मुल्क में. एक तो हमने माजी में जो एडवाइजर्स अपॉइंट किए, जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, दे चार्ज अ रिटेनर बट दे डोंट रियली मेक मनी ऑन द रिटेनर, दे मेक मनी ऑन द सक्सेस फी. और जब वो ट्रांजेक्शंस कंप्लीट नहीं हुई तो दोज इन्वेस्टमेंट बैंक्स have shied away from Pakistan. So that is hurting the program. We need to bring them back, and inshallah we will bring them back. But that will take 1 or 2 successes. Secondly, investors का भी इस वक्त जो एक thinking है वो ये कि they are watching whether we are, how serious are we, and how successfully we implement some transactions. So I think at this stage we will see local interest, but I'm hoping, and I'm already actually, it's very fortunate, just last week I was talking to one of the business groups, and in one of the transactions that we will be working on, there's already 1 or 2 international entities who want to meet us. So that was a very good sign. So I think 6 months down the line, or 6 to 12 months down the line, 6 to 9 months down the line, inshallah, we will start seeing more international interest, but not right now. Okay. Thank you very much for that. There's been a continuous exodus of foreign investors from Pakistan. Even the recent times we've seen NG leave, they sold Watch Power, we've seen Telenor exit markets, they're in the process of exiting Pakistan. And then Ingredion, Rafan Maize, they're also entertaining, bids from potential bidders to divest their stake in Rafan Maize. So how concerned is the government about the exodus of foreign investors from the country, and what can be done to reverse that process? I think definitely there is concern at a time when we are looking for more FDI. If existing players are exiting the market, so how will we, it makes the life challenging and difficult to attract new investment when existing players are leaving. How do we stop them? I think there are 3 things that we need to work on. Firstly, I think at the overall economic structure, the wealth distribution has to be wider, because purchasing power Pakistan में आज भी we still have $1,500-1,600 per capita income country. तो per capita income के हिसाब से purchasing power बहुत कम है. तो consumer companies, pharma companies, they make money, but a lot of entities जिसमें price tag is on the higher side, they are not able to find the right a large market here. So overall I think economic जो growth है उसको हमें देखना होगा, number 1. Number 2, business climate, ease of doing business, उसको हमें देखना होगा.
बिकॉज हमारी रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर अनफॉर्चुनेटली सब में तो नहीं बट काफियों में एक बड़ा इन्फोर्समेंट बेस्ड कल्चर बहुत ज्यादा है कि दे लुक एट एवरीवन फ्रॉम अ वेरी फ्रॉम they consider that everyone is a chore. Now everyone is not a chore, you know. You have to differentiate and that's your job. अब मेरा एज अ रेगुलेटर हमारा काम अगर हम काम अपना नहीं कर रहे तो आसान है ये कहना विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एससीसीपी आई हैव बीन द चेयरमैन आल्सो कि जी सबके ऊपर आप नोटिस डाल दें. वी कांट डू दैट बिकॉज किसी बिजनेसमैन को एक नोटिस मिलता है किसी भी रेगुलेटरी बॉडी से, उसकी रातों की नींद हराम हो जाती है, उसको एक लॉयर अपॉइंट करना पड़ता है, फिर कोर्ट्स में इतने केसेस हमारे जाते हैं जो डिसाइड ही नहीं होते सालों तक, हाजिरियां देनी पड़ती हैं. तो एंड वी हैव ऑल फेस दीज इश्यूज. तो आई थिंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम सिर्फ सोचते हैं जी कि एक वन विंडो अपॉर्चुनिटी हो जिसमें कोई आए और बिजनेस इनकॉर्पोरेट हो जाए और अप्रूवल्स मिल जाएं, बट अप्रूवल मिलने के बाद बिजनेस सेट करने के बाद उसकी जिंदगी आसान करनी है. दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विच वी आर नॉट रियली फोकस्ड ऑन राइट नाउ. सो आई थिंक उसका जो हल है हमारी रेगुलेटरी बॉडीज में जो हम अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं, आई थिंक वी नीड टू लुक एट दैट. हम सबको पता है कि रेगुलेटरी बॉडीज में कुछ में अपॉइंटमेंट बहुत ही गलत हुई हैं और वो लोग शायद इस काबिल नहीं है कि उन्हें चला सकें. तो वी हैव टू लुक एट दोज थिंग्स. थर्डली, I think we will, and the current finance minister, mashallah, is looking at it, and he is very passionate about it. And inshallah, we will see इस साल के बजट में और आने वाले बजट में inshallah आप देखेंगे कि चीजें बेहतर inshallah होंगी. कि हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर है ओवरऑल, देखें अगर हमारे यहाँ इस वक्त टैक्स रेट बहुत ज्यादा है और मजबूरी भी है, हम IMF प्रोग्राम में है, फिजिकल डेफिसिट भी है, तो मजबूरियां भी हैं, चैलेंजेस. बट गोइंग फॉरवर्ड आहिस्ता आहिस्ता we will have to, I think, move towards a wider base and a lower rate. These are the things that will, to start with, we need to work on to stop the exodus that we are seeing. Okay. Thank you very much. Raisa, if I could come to you, we all understand and appreciate that the government's investment capacity is constrained because of higher debt levels, but the private sector has immense financial slack available. We have one of the lowest private credit to GDP ratios probably in the world. The private sector balance sheets are very strong, and you talk to the businessmen, they generally want to, they have the capacity and they have the willingness to invest as well. But the overall ecosystem is not really conducive, especially when it comes to factors like taxation, the policy certainty, and the availability of foreign exchange. So what, in your view, can the government do in the current environment to encourage at least the local investors to at least start investing by removing some of these hindrances? Asif, I would say that there has been a lot of talk about public-private partnerships in recent years. And I think the IPP's policy, the power policy, and the investments made by a number of IPPs were probably the best example of public-private partnerships. Although the IPPs later on ran into troubles for various reasons, some of which the minister has also pointed out, my fear and my concern is that public-private partnerships where governments typically design and regulate the infrastructure project and the private investor comes in with the financial capital and the management expertise, typically these projects require policy continuity over a very long period. And as the minister rightly said, one of the major challenges that we as a country have faced is lack of policy continuity. I personally think that public-private partnerships have not gained a lot of traction even in the provinces. I don't know how this policy continuity can be ensured. The minister's ideas are very heartening and very encouraging. And the best hope would be that the public-private partnership policy framework is universally accepted and endorsed and followed by all the political parties. That can be potentially one avenue where the public sector can partner with the private. Since I am a financial services professional, so
I would like to talk a little bit about the privatization that is going on in the financial sector in particular. And I have a few questions for the minister also. I would like to point out that there are a few other institutions also that are probably stifling or discouraging the growth of the financial sector, and the National Savings Center is one of those. Some of the national savings schemes offered by the government are such that nobody in the private sector, no bank, no mutual fund, no insurance can compete with those schemes. So probably in the first phase there is a need to at least create a level playing field. Even if the government does not intend to privatize it, at least in the first phase it can be probably converted into some sort of a mutual fund which takes money from the public and invests it into different avenues, so that the private sector at least is given the opportunity to compete with the savings center. Just like the commercial banks which are owned by the governments, the likes of National Bank and Punjab Bank, most of the public sector banks, although they are doing well, but they have been outcompeted by the privately owned banks because there was a level playing field to a great extent. So I would like to draw the attention of the minister to the savings center as well. It is sitting on savings worth 4 trillion rupees, which are not invested in any financial instruments. The money goes straight into the government's budgetary accounts. So probably that's an area. The minister talked about privatization of some of the government-owned insurance companies. It was heartening to know that. And a few banks also, but not the commercial banks owned by the provincial and federal governments. So this is another question that I have, that would there be plans to privatize the government-owned banks also, which are currently profitable and probably doing well. But at a philosophical level, we all agree that government should not be providing services which the private sector can provide in a competitive manner and at a reasonable cost. One important area where some sort of privatization has happened and which pertains to the financial sector also is the pension reform that we are seeing in the federal and provincial governments. Finally, the governments are realizing that the pension promises they were making were too generous and they lacked the financial strength and the expertise to meet those promises. And finally, they have decided to partner with the private sector. And instead of acting as the investment manager and as the insurer and as the custodian of those monies, the government has finally decided to partner with the private sector, opt for contributory pension schemes for the employees, and let the fund managers, pension fund managers manage those monies. Let the insurance companies provide the guarantees that people need. Let the private sector auditors audit the financial statements of those pension funds. And let the independent custodians take care of the money and keep it safe. So I believe that it's a classic example where the government has finally realized that it cannot do everything by itself. It has to let the financial institutions in the private sector play their legitimate role. I am very confident that the upcoming pension reforms will not only improve the government's fiscal situation, but will also be a major game changer for our capital markets, because typically these pension funds and insurance companies have long time horizons, and hopefully as they accumulate more assets, there will be huge demand for all types of financial assets, including bonds and stocks, and that would be a great development. So I believe pension reform in many ways is an excellent example of public-private partnership,
which creates huge demand for financial assets, which brings in professional expertise, more efficiency, and more transparency. One more question that I have for the Minister is that we hear that in most countries where the rate of innovation is higher, typically governments subsidize the R&D effort. So if we want to encourage innovation, would privatization alone be enough, or would government at some stage will resort to a policy where it provides funding for R&D to the deserving private sector enterprises? Thank you. So, हमने तो आपको जवाब देने के लिए बुलाया था. You've started asking so many questions, but nevertheless, I'll request the Minister to answer. If you could answer some of the questions that Valay Sahab has raised. The commercial banks, not in the sequence that you asked, but commercial banks में जो तीन specialized banks हैं, First Payment Bank, Zari Taraqqiyati and SBFC, those are on the list. I think commercial banks पे तो अब National Bank रह गया government के पास, बाकी ये DFIs हैं, तो वो I think privatized अभी नहीं होंगे. मेरा ख्याल है कि once we have, as I said, some successes, तो फिर we'll be in a position to get more companies. But you're absolutely right कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं which have become part of our daily living. For example, national savings. You rightly said कि भाई ठीक है अगर उसको आपको प्राइवेटाइज करना है तो गवर्नमेंट, yes, government is a borrower and government is borrowing through NSS from the public, but is this the way we want to borrow, or we want to borrow through the capital markets, for example, and give these NSSs to the private sector through mutual fund or whatever. तो ये सब चीजें होनी चाहिए. तो मेरा ख्याल है कि ये जो ओवरऑल प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम है, ये जर्नी, ये सब कुछ करना कुछ वक्त लगेगा, 3, 4, 5 साल की जर्नी होगी जिसमें आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें जाएंगी. बहुत सारी चीजों में आई थिंक कि हमें लोगों को एजुकेट भी करना पड़ेगा, नैरेटिव बिल्डिंग करनी पड़ेगी, कन्विंस करना पड़ेगा. इट वोंट बी इजी. लाइक इस रूम के अंदर तो वी आर ऑल सॉर्ट ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, प्राइवेट सेक्टर से, फाइनेंशियल सेक्टर से, बट डिसीजन मेकिंग के अंदर bureaucracy is involved, politicians are involved with different ideologies, different parts of the country. Justice system के लोग involved होते हैं, lawyers involved होते हैं, media involved होता है. So I think that this will gradually, as we see some successes, I think वो आहिस्ता आहिस्ता ये होगा. But just touching upon what you said, I think R&D, मेरा ख्याल है कि R&D के funds हमारे पास होते हैं, मेरा ख्याल है सही तरह यूज नहीं होते हैं. हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बाकी लोगों के पास थोड़े बहुत फंड्स होते हैं, लेकिन क्या वो सही लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, आई एम नॉट श्योर. बट ऑब्वियसली वी डोंट हैव वेरी हाई फंड्स. अगेन उन चीज़ों के अंदर हमें ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी लानी होगी. आई थिंक दो चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें सीरियसली सोचना चाहिए, एक फ्रॉम द ओवरऑल लेवल और एक फ्रॉम द कॉर्पोरेट लेवल. ओवरऑल जस्टिस सिस्टम हमारा जब तक एफिशिएंट नहीं होगा तो बहुत सारे मसले हमारे हल नहीं होंगे. अगर 20 साल लगेंगे इंसाफ लेने में, और हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स आज भी इन्वेस्टर्स कहते हैं जी कि इट शुड बी गवर्नड बाय द यूके लॉ या सिंगापुर लॉ, तो ये चीज़ें हमें देखनी होंगी. वी विल प्रॉब्ली नीड स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स, जैसे कि बैंकिंग कोर्ट्स हैं, जस्टिस जल्दी हो जाता है. हमें उस टाइप की चीज़ें सोचनी होंगी कि वो कैसे होंगी, रीस्ट्रक्चरिंग लॉज, बैंक्रप्सी वगैरह के. एक तो वो हमें ओवरऑल जस्टिस सिस्टम और लीगल सिस्टम जब तक बेहतर नहीं होगा तो बहुत सारे हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होंगे. एफडीआई भी शायद नहीं आएगी. अगर प्राइवेटाइजेशन में कोई एंटिटी आई कहती है जी कि आई बाय एन एसेट बट गवर्नमेंट मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इट विल बी गवर्नड बाय द यूके लॉ, शायद गवर्नमेंट ना कर सके. तो आई थिंक एक तो ये है. सेकेंडली, टैक्स के अलावा हमें आई थिंक एक और चीज सोचनी होगी विच विल आंसर अ लॉट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, इज how the overall business world is structured and organized. अब पाकिस्तान में आज की तारीख में शायद 1.5-2 लाख कंपनीज होंगी. अब मुझे बताएं कि मैं हमारे मुल्क में कंपनी क्यों बनाऊं. मैं ये जब मैं एसईसी पे चेयरमैन था 2011-12, उस वक्त से मैं ये या तो मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे कोई कन्विंस कर ले भाई, कि मैं पाकिस्तान में उस वक्त मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को, हमने फिर बाद में आप लोगों ने भी दिए होंगे, 1.5-2 लाख कंपनियां हैं और पाकिस्तान में टोटल को 30-40 लाख बिजनेस है.
तो कॉर्पोरेट जो कंपनीज हैं दे आर हार्डली 5% ऑफ द बिजनेसेस. अगर मैं दुनिया में कहीं भी मुझे बिजनेस करना है, अगर मुझे एक हॉकर शॉप भी खोलनी है, तो मुझे बिजनेस की रजिस्ट्रेशन कहीं करवानी होगी, एक लाइसेंस होगा, रजिस्ट्रेशन होगी, वट. हमारे यहाँ दिस नो बिजनेस रजिस्ट्री, नंबर 1. नंबर 2, अगर मैं कंपनी बनाता हूँ वर्सेस अगर मैं पार्टनरशिप रखूँ या सोल प्रोप्राइटरशिप रखूँ, अगर मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ या पार्टनरशिप हूँ तो मुझे एसईसीपी को जवाब नहीं देना, कोई ऑडिटर नहीं होगा, रिक्वायरमेंट नहीं है. अच्छा, मैं डबल बुक्स भी रख सकता हूँ, कोई पूछने वाला ही नहीं है. मेरा टैक्स रेट भी कोई ज्यादा नहीं है उसके अंदर. द मोमेंट आई मेक अ कंपनी इन पाकिस्तान, एसईसीपी, ऑडिटर, टैक्सेस पूरे देने, तो भाई मैं क्यों बनाऊं कंपनी? दैट्स द प्रॉब्लम. तो प्लस होल्डिंग कंपनी के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका टैक्स रेट वगैरह, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड की जो स्ट्रक्चर है वो, तो हमें ये चीजें सॉल्व करनी होगी. पाकिस्तान में अगर हम एक तो हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हमने जो सिस्टम बना दिया है बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कि कुछ चीजें वहां पर गवर्न होती, कुछ यहाँ पर होती, दुनिया में होता है. बट आई थिंक उसके अंदर भी हमें एक स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है कि बिजनेस रजिस्ट्री हो, जो कि सिर्फ रजिस्ट्री हो, और साथ साथ टैक्सेशन रिजीम कंपनीज पे, पार्टनरशिप पे, सोल प्रोप्राइटरशिप पे कैसे होगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज बने. जब कंपनीज बनेंगी तो फिर कैपिटल मार्केट भी फ्लरिश करेगी. तो आई थिंक आई जस्ट वांट टू टच अपॉन दिस बिकॉज टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर प्रेजेंस हियर एंड द ऑडियंस हियर, कि हमें इन चीजों को भी सोचना है, जस्टिस सिस्टम को भी देखना है, तब आई थिंक ये पूरा जो है ना चीजें बेहतर होना शुरू होंगी. थैंक यू. बड़े सर, प्राइवेट इक्विटी का रोल क्या हो सकता है इन फैसिलिटेटिंग द privatization process? मतलब private equity there's a huge pool of long-term savings available with some of the public sector pension funds, with state life, with other private groups as well. They want to invest, but we don't have the right vehicles because of the inefficient taxation structure. So is there something that the SECP can do to actually facilitate, to assist in the process of privatization by encouraging more formation of private equity funds or those kind of structures? Asif, I would agree. I think it should probably be the highest priority for the financial regulators to encourage PE and VC investments in the country. Right now, the size of these funds and the number of these funds is shamefully small. Many people think that private equity in Pakistan happens in the regular company structure. There are different business groups who have umbrella companies which then own a number of different other companies. I am not very sure whether it's an awareness problem, whether it's a regulatory problem, whether there is a shortage or lack of risk capital for these sort of investments in the country. Until a year or so ago, we were hearing that the startup culture and ecosystem was building up, but I think during the global economic turmoil that is going on for the last 1 or 2 years, probably that momentum has also lost some steam. SECP currently is working with the stock exchange to set up some sort of a platform at the stock exchange where entrepreneurs who have ideas, they can come, share their ideas and start raising money also for their ventures. So right now it seems that fundraising platforms exist in the private sector only. There are no properly regulated crowdfunding or private equity raising platforms in the country. So we keep thinking about that. A few seminars have also been held to understand what are the bottlenecks and what SEC can do, but I would admit that there is not much headway. We are still grappling as to how to encourage more investment in PE and VC funds. I think there are a number of leading finance professionals sitting here. I think this is one area where CFA Society and SEC can partner. We can hold more seminars, we can invite more entrepreneurs,
more investors. We can create more awareness and try to find ways as to what the regulator can do to encourage these PE and VC funds. I think if there are more of such funds available, that will definitely help the cause of the government also to privatize some of their assets. So can we expect something in this upcoming budget in terms of the taxation, removal of double taxation on the funds? Yes, we are strongly recommending to the Finance Ministry and the Federal Board of Revenue that the dividend paid by the portfolio companies to the parent fund is like so the parent fund, the PEVC fund, is like a pass-through vehicle, just like a mutual fund, because it invests in a portfolio of companies, and whatever dividends it receives after deducting its own expenses are passed on to the investors. So we are very confident that the double taxation will go away, and they will be treated at par with mutual funds as pass-through vehicles. I think that's great news. Minister Sir, we received some questions from the audience as well. Is there a need to simplify and reform the privatization process, because it generally takes more than a year before you, from the start of the transaction till you find out whether the transaction has been successful or not? So is there a way of actually shortcutting that process? Yeah, in an ideal world, if we can reduce the time, that will be great. But I've looked at it, and you're right कि 1 साल लगता है roughly. उसके अंदर the issue is उसको कम करना मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुश्किल है. But that's something that we will. Transparency की वजह से? हाँ, transparency और I think काम की वजह से भी, because बहुत सारी entities जब आती हैं तो they are not ready for privatization. तो जब वो आती हैं तो सेक्टर रेगुलेटरी बॉडीज वो तैयार नहीं होती हैं, तो उसके अंदर कोई 3-4 महीने लग जाते हैं. अच्छा, इसके बाद जब एक्चुअल प्रोसेस शुरू होता है तो आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर अपॉइंट करना होता है, बिकॉज वो कैपेसिटी विद इन द गवर्नमेंट तो नहीं है सारा कुछ. तो यू विल नीड एनी गवर्नमेंट वुड नीड अ फाइनेंशियल एडवाइजर. उसको अपॉइंट करने का जो प्रोसीजर है उसमें कोई 1-1.5 महीना लग जाता है. यू गिव एन एड, दे विल अप्लाई, व्हाटएवर. अच्छा, व्हेन द फाइनेंशियल एडवाइजर कम्स ऑन बोर्ड एंड मोबिलाइजेस द टीम, उसमें कोई 2 हफ्ते लग जाते हैं. तो 2 महीने ये हो गए आफ्टर डूइंग द होमवर्क. Financial advisor will do the sell-side due diligence, and he will prepare the IM and sectoral क्या changes करनी है, पूरी due diligence होगी. That takes couple of months, 2-3 months लग जाते हैं. Then the EOI is published, parties apply, उनकी pre-qualification होती है 1-8 महीना. So from the start we are already at 6 months. Okay. And the buyer, when the pre-qualified bidders, a lot of times they need roughly 3 months for their own due diligence. Like this goes, PI के अंदर हमने for example 60 days रखा है अभी, but it might go by 75 भी हो सकता है अगर लोग कहेंगे तो. Just to give an example, हमने EOI publish किया था तो हमने June 3rd की deadline रखी थी, but then the parties are saying कि आप बढ़ा दें ईद की वजह से, तो 15 दिन बढ़ाना पड़ेगा. तो ये पूरा प्रोसेस फिर buyer due diligence होती है, फिर उनसे negotiation होती है, फिर bidding होती है, तो roughly 10 to 12 month का process हो जाता है. I don't know yet how to reduce it. If we can, I would be very happy to hear any thoughts or ideas. But इस वक्त मुझे लग रहा है कि शायद ये मुश्किल होगा. Okay. SIFC का रोल क्या है in the privatization process, if at all there is a role for SIFC, और कितना effective है? SIFC का रोल प्राइवेटाइजेशन में कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है. जहाँ हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, for example, SIFC is looking at attracting international investment among other things that they are doing. So when they're looking at getting FDI, so they're interacting with international investors and talking to them about investment in various sectors. So obviously वहाँ पर एक थोड़ा सा skill set develop हुआ है और वो relationship भी develop हुई है, and they are more in touch with the international investors directly, which PC is not. We are in touch to the financial advisor. So there are some transactions in which we work jointly with SIFC or at a committee level. But their role is primarily at the committee level, जहाँ पर वो support हमें चाहिए होता है, but otherwise not very active at the moment at least. Till a couple of months ago, we used to hear a lot about investment coming in from GCC and Recordec and mining and other transactions, oil and gas and stuff. But none of that has actually materialized so far. So what do you think is actually holding them back? I think कुछ चीज़ों में तो the fault lies at our end because हम वो projects उस level पे develop नहीं कर पाए.
So I think the country is also going through a learning phase. जब केटेगर गवर्नमेंट के अंदर जब हम थे तो उस वक्त हम जा रहे थे और बात कर रहे थे और हमने जो प्रोजेक्ट्स उनको पिच किए तो हमारी जो पिच थी वो उसके अंदर उन खाली हमने सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए और मैक्रो नंबर्स उनसे डिस्कस किए. बट आई थिंक व्हाट दे वर लुकिंग फॉर इज अ डिटेल्ड स्टडी कि अगर आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाना है, कोई ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी है, कोई रिफाइनरी है, कोई और चीज़ है, तो दे आर लुकिंग एट डिटेल प्रेजेंटेशंस. तो I'm not involved in that, but now as the government / SIFC, they have appointed A.T. Kearney to develop those projects and whatever. तो I think वो जो काम उस लेवल पे करना है वो अब मुल्क में हो रहा है. तो unless we have those viable, bankable feasibilities and detailed assessment of every business idea, तो मुश्किल होता है. Now I think that homework is being done at the moment. मेरा ख्याल है. Okay. Vadai sir, Pakistan has been this stabilization phase for the last 3 years. We had this huge economic crisis in 2022. It's sort of become a norm. It's been a very protracted stabilization phase, 3 years with average growth of about 1.7%. And none of our problems is going to be solved with that kind of growth rate, be it in creating employment, generating resources for healthcare, education, pensions, stuff like that. So is there an alternate path available to Pakistan, or should the businesses and the government get together and find an alternate to IMF and to their prescriptions, because it doesn't seem like that they're going to allow Pakistan to grow at 5-6% with the current tight monetary and fiscal framework that we have in place? Yes, I would completely agree that our current approach to stabilization and economic reform is definitely not working. Instead of focusing on supply-side reform, I am a big proponent of supply-side reforms, by the way, and privatization is probably the most fundamental of all the supply-side reforms. But having high-quality education, investing in healthcare, taking care of the human capital, making them more productive. In the long run, this is the best reform that you can have. That will make your people more productive, that will take care of inflation, that will generate more exports and everything. So almost every macroeconomic challenge is cured if you can invest in your productivity, long-term productivity of your human capital. And of course, privatization plays a very, very important role. So I personally think that we have not been able to focus on the long-term reform, which mainly consisted of supply-side reforms, gradually increasing productivity, lowering taxation, creating more education, awareness, and opportunity. We have instead focused on short-term stabilization. IMF always has a very short time to implement its prescriptions. It's either a 2-year or a 3-year program, and they usually have learned that it's better to, in fact, front-load the program. Most painful adjustments should come first. Typically, these reforms starve the governments of the funds that they need to be investing in some other high priority areas. So I completely agree that we need to take responsibility. Many of the reforms that IMF tells us are already known. We lack the political will. As the minister rightly said, the policy continuity is our major challenge. Democracies are notoriously short-sighted. And we repeat those mistakes, and we are in an ongoing cycle, unending cycle of macroeconomic instability, and then going for some very stringent macroeconomic reforms without really addressing the underlying issue, which in my opinion is low productivity of the economy and poor resource allocation in the economy. You went to Sri Lanka recently, as far as I understand. So what was your general impression over there? There's a country which has come out of a very painful debt default. So what have you seen there, and what lessons can Pakistan learn, if any, from Sri Lanka? I honestly could not believe that this country defaulted a year or so ago.
Most of the people seemed very educated. The women participation in the workforce was extremely high. Wherever I went, almost half of the working staff was women. Their infrastructure was very impressive. There was a general, people told me that the society is generally tolerant, although they have had a very intense and a very painful civil war. But generally there is a lot of tolerance in the society for different religions, for different schools of thought. So on every measure, the society seems very impressive, and I couldn't believe, probably there was corruption at the top, and probably they were too dependent on tourism, which took a big hit during COVID, and their slide into bankruptcy was very quick, and they were unable to take some difficult decisions. But they I are bouncing personally back. think that some corruption at the top, excessive reliance on tourism, and some bad luck. Otherwise, they seem to be a much more coherent, much well-organized society, and it seemed that people knew what they were doing and they had confidence in their future. So I think that default was more of a bad luck, and I think Sri Lanka will do very well in future. At least that's my perception. Okay, thank you. Minister Saab, you were part of the task force which looked after the issue of power sector circular debt. You're part of the new committee which has been set up for petroleum sector reforms. So can you share some details about the agenda and timeline for this committee in terms of resolving the circular debt problem for the gas sector? Gas sector. As you know, power ka to we realized that it's linear. So Yeah. we have done the bank financing wala part. That's almost done. I'm hoping that the next 2-3 weeks, hopefully disbursement वगैरह हो जाएगी, तो that will be done. On the petroleum, we have done some work, and petroleum के अंदर जो सारा circular जिसकी हम बात करते हैं 27, 28, 100 billion, वो सारे का सारा circular नहीं है. Part of it is linear. For example, अगर Suez owe money to Suez का अगर Gas differential? gas differential is the only circular part, because वो अगर स्वीज को मिलेगा गवर्नमेंट से तो वो इवेंचुअली ईएनपी कंपनीज को मिल जाएगा, दे मे और मे नॉट गिव डिविडेंड्स. बट जो बाकी है वो लिनियर है, बिकॉज अगर एफबीआर से कोई टैक्स रिफंड आना है या टैक्स पेएबल है या केई के साथ कुछ है या स्टील मिल के साथ, वो तो उन कंपनीज का आपस का मामला है. तो सर्कुलैरिटी जो है वो पूरी 27-2800 बिलियन की नहीं है, वो हमने जो कैलकुलेट की वो तकरीबन 1300 बिलियन की सर्कुलैरिटी है. बाकी लिनियर है, स्टील मिल, केई, प्राइवेट सेक्टर ईएनपी, वो उनका कंपनीज का आपस का मामला है. उसके अंदर we have done some homework, and we have discussed with IMF, with the government also. तो उसके अंदर work is going on. So let's hope कि once we have alignment with IMF, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर we'll see some progress. Okay. Private IPPs and public IPPs के contracts were renegotiated. तो power sector में तो you renegotiated a lot of contracts. Qatar LNG के ऊपर कोई progress हो रही है, that's causing a lot of pain for us as well. That's resulting in lower production of by domestic E&P companies. That's hurting them badly. So is there anything on the table right now? Is there something that the government can do? Can they walk away when the pricing reopening actually happens next year? Yeah, एक तो you know कि price reopening March 26 के अंदर है कुछ contracts की. उसके ऊपर there is a clear realization कि उसके ऊपर हमें conversation open करनी चाहिए with Qatar. लेकिन I think उसके ऊपर अभी तक वो कोई काम हुआ नहीं है उसके ऊपर, ये वो बातचीत अभी शायद उस स्टेज पर हुई नहीं है. बट वो एक चीज़ है कि जिससे हमें एक ब्रीदिंग स्पेस थोड़ा सा मिलेगा. So that's one thing. Walk away की option available होगी at that point in time? You think that that's not part of it? मेरा ख्याल है walk away शायद ना हो. It's more a deferment of the cargo. Okay. Because वो strategic relationship भी देखनी होगी. But at the same time, I just want to touch upon another thing कि it's true. पेट्रोलियम कमेटी तो अभी कोई 1-2 हफ्ते पहले ही सेट हुई है, तो we were more focused on power. पेट्रोलियम में हम खाली सर्कुलर डेट देख रहे थे, बट हमने देखना शुरू किया है कि ओवरऑल जो प्राइसिंग है गैस के डिफरेंट कंज्यूमर्स को, उसको कैसे रैशनलाइज किया जाए इन अ वे के डिमांड बढ़े. बिकॉज देयर इज एन अनोमली हियर कि वी हैव एक्सेस सप्लाई ऑफ गैस, लोकल हम कर्टेलमेंट कर रहे हैं,
LNG हमारे पास एक्सेस है, but at the same time demand भी है. But the problem is that the way we are supplying gas to the consumers is only through the pipe network. अब बहुत सारी इंडस्ट्री होगी जो आपसे LNG की प्राइस पे शायद गैस लेने को तैयार होगी, वहाँ पे पाइप नेटवर्क हो ना हो मुझे नहीं पता. So virtual LNG की regime भी हमारे पास है, through Bowser trucks you can supply to them. Domestically LNG कनेक्शन पे बहुत ज़्यादा तो नहीं पड़ा, I'm sure कुछ कंज्यूमर्स होंगे. तो ओवरऑल अच्छा फिर जिन पाइप गैस भी हमने प्राइसिंग ऐसी रखी है कि उसमें लाइन लॉसेस और उसमें लोड शेयरिंग भी हम कर रहे हैं. तो एक तरह अच्छा पाकिस्तान अगेन इज एनर्जी स्टार्व्ड, वन ऑफ द लो एनर्जी कंजम्पशन कंट्रीज एट द मोमेंट. अच्छा फिर द होल सेक्टर एज यू हैव बीन हाइलाइटिंग आल्सो इज गोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रिफिकेशन, कि आपको फ्यूचर में तो गाड़ियां, ईवीज, हीटिंग सब कुछ इलेक्ट्रीफाइड होगा. तो आई थिंक ओवरऑल एक प्लानिंग करने की भी जरूरत है कि हमारे मुल्क में डिमांड भी है, सप्लाई भी है, प्राइसिंग ठीक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो ठीक नहीं है, तो इन चीजों को कैसे हल करें. बट टू डू ऑल दिस यू आर राइट कि कतर के LNG कार्गोस को देखना पड़ेगा, बिकॉज वी विल नीड दैट ब्रीथिंग स्पेस. ओके, जो पावर सेक्टर की सर्कुलर डेट की 1.2 ट्रिलियन देयर अबाउट्स की रीफाइनेंसिंग होनी है. अब आई वाज रीडिंग द IMF प्रोग्राम, द सर्टेन commitments that the government has made that will result in the reduction of waiver of LPI of about 400 odd billion. A part of that has already happened in negotiations with the private IPPs. But I think there is a significant amount of LPI which will have to be waived by projects which are set up under the CPAC. So is there anything which has been agreed with those CPAC projects in terms of LPI waiver? And secondly, whether that release of that 1.2 trillion is contingent on all parties agreeing to the terms, or it can be settled partially as well? Basically, अगर वो हम जो पेमेंट जो हम करेंगे तो उसके अंदर हमने कहा है कि जो अभी तक मैंने पेमेंट की है कि वो LPI अगर वेव हुआ है तो वही पे पेमेंट हुई है. तो अभी चूंकि वो फंडिंग आई नहीं है, Okay. इसलिए वो कॉन्वर्सेशन अभी शुरू नहीं हुई है. होपफुली व्हेन वी गेट द फंडिंग देन दोस कॉन्वर्सेशंस विल आल्सो हैपन. Okay. समीर साहब का एक क्वेश्चन था कि you've emphasized the importance of successful transactions to get things rolling. So maybe smaller transactions can be done first very quickly so as to create a momentum. For example, you talked about PMDC and some of the other smaller transactions. So is that something that you're looking at maybe, or have parallel tracks where you can do some quicker transactions earlier and then move on to the more difficult and strategic? I think in order to see a success शायद हमें कुछ माह लगे, because इस वक्त हमारे पास PMDC, PNSC वगैरह जो लास्ट स्लाइड थी वो हमारे पास है ही नहीं in the privatization program. Those are the, as I wrote on the slide, those are the possibilities for the future. But those companies are there, which hopefully will be privatized one day. तो successes मेरा ख्याल है कि inshallah in the second half of the year we will see successes, and second half is not that far. So I'm very hopeful that we will see some successes. छोटी ट्रांजैक्शन में हमारे पास ZTBL है, फर्स्ट पेमेंट बैंक है, HBFC है, ये तीन सिंपलर ट्रांजैक्शन है बैंकिंग सेक्टर के अंदर. दिस कोर्स विल टेक टाइम. मेरा ख्याल है कि वो उसमें अभी होमवर्क हो रहा है, टाइम लगेगा. PIA आई एम वेरी होपफुल बिफोर द एंड ऑफ द ईयर. रूजवेल्ट पे ट्रैक्शन शुरू हो जाएगी, तो यू विल इंशाल्लाह सी सक्सेसेस. कुछ तो शायद हो कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, कुछ यू विल आल्सो सी कि उसके ऊपर जैसे कि PI के अंदर अब होपफुली EOI जब सबमिट होगा, फिर प्री क्वालिफाइड बिडर्स होंगे, so you will see some movement. But I am hopeful कि second half of the year में you will see. जी बड़े सर. Sir, I also have another question. एक तो रूजवेल्ट के हवाले से मेरा सवाल ये था सर कि don't you see it as an asset which has the potential to generate income denominated in foreign currencies? So would you not like to retain such assets that can potentially generate foreign currency denominated income? दूसरा सर मेरा सवाल ये था कि आप जो गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेसेस हैं, आप क्या बिलीव करते हैं गवर्नमेंट को कम्प्लीटली एग्जिट करना चाहिए या अपना शेयर डाइल्यूट करके माइनॉरिटी शेयर होल्डर के तौर पे रहना चाहिए? और ये जो सॉवरेन वेल्थ फंड या इन्वेस्टमेंट फंड का कॉन्सेप्ट होता है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी इस तरह का एक इन्वेस्टमेंट फंड होना चाहिए, अगरचे अगर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं भी कर रही बिजनेसेस को, मगर उसका कुछ पोर्टफोलियो होना चाहिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स का?
अच्छा, पहली बात जो है वो रूजवेल्ट, देखिए हमारे लिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान में बैठ के न्यूयॉर्क में एक होटल चलाना इज नॉट इजी, बहुत मुश्किल काम है। हमारे अपने मुल्क में होटल हम नहीं चला सकते, तो न्यूयॉर्क में खाते चलाएंगे। अच्छा, फिर वहां पर जो रिजीम है वो बड़ी फर्क है। हमारे यहाँ द वे सी वी आर एक्सपर्ट्स इन रियल एस्टेट इन द पाकिस्तानी रिजीम, कि जी आपने प्लॉट लिए, रेगुलेटरी बॉडी ही नहीं है पाकिस्तान में, आप माल बेचते हैं, पैसे लेते हैं, चीज बनाते हैं, व्हाटएवर यू नो, तो बड़े फर्क रिजीम है। वहां पर आपको जो यूनियंस हैं, जो एयर राइट्स हैं, जो सिटी काउंसिल्स हैं, उन सबसे निगोशिएट करना, अगर आपको बिल्डिंग का एफआईआर बढ़ाना है तो उसकी कितनी अप्रूवल्स चाहिए, एंटाइटलमेंट किस टाइप के हैं, वो नॉलेज हमारे पास नहीं है। सो एंड ऑफ द डे वहां पर अगर हम चलाएंगे तो वी विल नीड पीपल ऑन ग्राउंड, we will need lawyers and consultants and financial advisors and property managers on ground. Now that requires a lot of decision making, so which means that the government will be actively working on that. So I think बहुत ही मुश्किल होगा हमारे लिए सोलो एक इंटरनेशनल रिजीम के अंदर वैसी प्रॉपर्टी को चलाना। हो सकता है कि आज चल जाए, लेकिन फिर गवर्नमेंट चेंज होती है, नए लोग आते हैं, यू नो, सबके पास वो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होगी नहीं, इट विल बी डिफिकल्ट। तो लेकिन उसको बेचने में ये जरूरी नहीं है, इट्स अ प्राइम एसेट, जरूरी नहीं है कि हम उसको एज इट इज बेच दें। ये हो सकता है कि हम बेचें, कुछ स्टेक रखें, कोई जॉइंट वेंचर करें, डेवलपमेंट करके किसी पार्टनर के साथ, नॉन पार्टनर के साथ हम उसको करें ताकि हमारी प्रोसीड ज्यादा हों। तो इस वक्त जो हम ट्रांजेक्शन स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं वो ये है कि हम किसी इंटरनेशनल पार्टनर जो कि एक्सपर्ट हो, एंड दीज पार्टनर्स इन द यूएस मार्केट, वी टॉकिंग अबाउट कंपनीज व्हिच आर developers which have balance sheets of $50 billion plus, huge. तो उनके साथ मिलके we can develop a project and you know sell and be a partner or whatever. So we're looking at that कि exit अगर हो भी तो over a 6 to 10 year period हो, ताकि government को maximum proceeds मिले. The government benefits. It's a hard currency asset that we have. That's number one. Number two क्या था? गवर्नमेंट अपनी शेयर होल्डिंग रिटेन करे कुछ या 100% एक्सिट? हाँ, 700. अच्छा, आई थिंक एग्जिट गवर्नमेंट करेगी. द ओनली रीजन गवर्नमेंट शुड नॉट कंप्लीटली एग्जिट इन द फर्स्ट फेज इज द इकोनॉमिक इंटरेस्ट. आई थिंक वी नीड टू बी वेरी क्लियर कि हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए या फ्रॉम द कंट्रोल पर्सपेक्टिव नहीं होना चाहिए. हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए कि इन द फर्स्ट फेज वी पास ऑन मैनेजमेंट, ऑपरेशन एंड कंट्रोल टू द प्राइवेट सेक्टर. We remain a minority passive investor in which our job is twofold. Number one, to maximize our economic interest, and number two, to protect our interest. For example, reserve matters honge, you know, nobody's taking us for a ride, what's our interest? And then at the right time, we should exit. This happened in the banking sector. We privatized and then gradually we exited. So I think वो strategy होनी चाहिए. और हो सकता है कि अगर हमारा if the sector is doing well and if the longer term view is positive on the sector, then the government may keep stake for a longer time, but the objective should be economic interest. मेरा ये view है. अच्छा, secondly, on the sovereign wealth fund, I think we need to as a country, as government, and that's the finance ministry's domain, we need to think a bit कि sovereign wealth fund के अंदर हमें ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा और हम क्या हासिल करना चाहते हैं. अगर उसके अंदर ये है कि जो हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, ये एसेंशियल एसेट्स हैं, बिकॉज कुछ होंगी जो कि गवर्नमेंट नहीं बेचेगी, अगर वो वहां पर हैं तो दैट्स फाइन. लेकिन अगर सॉवरेन वेल्थ फंड का ऑब्जेक्टिव है टू मेक मनी लाइक तमासिक का है या खजाना का है या बाकी सॉवरेन वेल्थ फंड पिफ वगैरह का है, तो वो हमें आई थिंक सोचना होगा कि अगेन दैट वो अगर हम चाहते भी हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन तो थ्रू ऑपरेशंस, थ्रू मैनेजमेंट चाह रहे हैं या हमें माइनॉरिटी स्टेक रखना है. ठीक है, अब आज की तारीख में हमारे पास सुई नॉर्थ, सुई साउथ में तो ऑपरेशंस है हमारे पास, तो क्या हम ये मॉडल करना है या हम इन सुईस को फॉर एग्जांपल 75 या 51% बेच दें और हमारा माइनॉरिटी स्टेक हो जो हम रखेंगे. तो सॉवरेन वेल्थ फंड को ये भी सोचना होगा हमें. अच्छा, थर्डली हमारी बोराइंग्स हम कर रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट है. अब जो सॉवरेन वेल्थ फंड हैं वो या तो मुल्कों ने इसलिए बनाए कि उनके पास रेवेन्यू बहुत आ रहा था, नॉर्वे ने बनाया, फिस्कल सरप्लस थे, तो पैसा था उनके पास, तो अगर अमीर आदमी उसके पास पैसा है तो बनाए सॉवरेन वेल्थ फंड. अब हम गरीब भी हैं, बोरिंग भी कर रहे हैं, सॉवरेन वेल्थ फंड भी बनाना है, तो ये आई थिंक
ये कॉन्वर्सेशन और ये क्लैरिटी जरूरी है कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू अचीव एंड व्हाट आर आवर रिस्पांसिबिलिटीज एंड द एंड ऑब्जेक्टिव. अच्छा मिनिस्टर साहब, दो क्विक क्वेश्चंस मैं पूछूंगा बिफोर वी क्लोज दिस सेशन बिकॉज वी हैव टू डू द चार्टर अवार्ड सेरेमनी एंड देन यू हैव टू go back to Islamabad as well, so I'm mindful of the time. पहली चीज about the transparency and the use of proceeds of these privatization transactions. A, कितने proceeds government को receive होंगे, because I understand a lot of these transactions will entail injection of capital into the company and nothing will come to the government. So तो उसकी transparency को किस तरह ensure करेंगे about the use of those privatization proceeds के कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, so that the public has confidence in the government that they are doing the right thing by privatizing those assets. जैसे कि पीआईए के अंदर we all know कि जो फर्स्ट राउंड था उसमें 85% ऑफ द प्रोसीड्स वर गोइंग इनटू द एंटिटी एंड 15% वर गोइंग टू द होल्डिंग कंपनी. वो गवर्नमेंट को तो नहीं मिल रहे थे. अब डिस्कोर्स के अंदर भी इसी टाइप का मॉडल होगा कि पैसे कुछ कंपनी में जाएंगे, कुछ गवर्नमेंट को मिलेंगे बिकॉज गवर्नमेंट ओन्स इट. तो आई थिंक ये स्ट्रक्चर तो बहुत सारी कंपनीज में फॉलो करना होगा अनलेस दे आर प्रॉफिटेबल एंड दे डोंट नीड एडिशनल कैपिटल. अब जो प्रोसीड्स गवर्नमेंट को आएंगी वो तो जनरली गवर्नमेंट को जाती हैं तो वो इस्तेमाल आपके फिस्कल में होंगी या कहीं पे, तो वो तो आई थिंक थ्रू द बजट एंड वो ट्रांसपेरेंसी तो मुल्क के सामने ऑलरेडी होती है. ओके, फाइनली ये जो डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन है, यू मेंशन दैट इन योर प्रेजेंटेशन एज वेल. We require a very strong regulatory framework before we privatize these natural monopolies. So do you think we are at that stage where you can actually think about privatizing these large distribution companies? Do we have the regulatory capacity in place? Do we have a long-term plan about how these distribution companies are going to operate? What the future of the electricity market will look like in terms of competitive markets, in terms of electrification of demand and stuff like that? So are we really there to start thinking about fast-tracking privatization of these distribution companies? To be honest, we are not in an ideal environment where one can say that we are there and let's do it. But at the same time, how long do we wait? So that's the challenge. Now, frankly, अच्छा फिर वेट भी करेंगे तो कितनी चीजें हो जाएंगी. द वे हम एज यू नो कि 2019 में जब रिपोर्ट बनाई थी तो उस वक्त पावर सेक्टर पे लिखा था एक पूरा चैप्टर है कंपेटिटिव मार्केट्स के ऊपर. उस वक्त भी कहा था हमने मिनिस्ट्री को कि भाई आप मार्केट बनाए, 2019-20 की बात है, आज तक तो नहीं बनी है. तो इट्स अ चैलेंज व्हाट कम्स फर्स्ट. तो द एनवायरनमेंट इज नॉट आइडियल बिकॉज वी डोंट हैव एस्टैब्लिश्ड मार्केट्स, नंबर वन. Number two, the capacity or the of the regulator, and which is natural किसी मुल्क में होता, is not there कि जब ये चीजें प्राइवेट हैंड में जाएंगी तो बहुत सारे सवालों के जवाब देने होंगे. यूनिफॉर्म टैरिफ रहेगा नहीं रहेगा, इनके रिटर्न्स कैसे सेट होंगे, इनकी प्राइसिंग कैसे सेट होगी, इनकी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट कैसे होंगी, MYT रहेगा नहीं रहेगा, जिन इलाकों में लॉसेज ज्यादा हैं या परचेसिंग पावर कम है उसमें क्या होगा, सोशल एजेंडा कैसे होगा. तो ये बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे बिफोर वी गो अहेड. तो दैट पॉइंट इज वेल टेकन. राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज कि जो एडवाइजर है हमारे अल्वेज एंड मार्शल, उस कंसोर्टियम के अंदर देयर इज US बेस्ड कंपनी नियोस के नाम से शायद, who are experts in these privatization, and they are helping. The whole consortium is working on कि क्या sectoral/policy/regulatory changes की जरूरत है, and we are looking at that. Power Ministry is working on that, and Privatization Ministry is also. What we need to do, I think, is to build the capacity in the Privatization Commission of the power sector experts. उसके बगैर ये काम हम शायद सही तरह ना कर पाएं. तो जिस तरह हमने टास्क फोर्स में भी काम किया तो we had people from SCCP, NEPRA, CPPA, PPIB experts थे, and they brought a huge amount of expertise and experience to the decision making and to the work that we did. I think we need that in the Privatization Commission. For the power sector, already उन्होंने PPMC को strengthen कर लिया है माशाल्लाह, तो they have the resources over there. तो पावर मिनिस्ट्री में PPMC की टीम और हमारी जो एक्सपर्ट्स टीम होगी, ये along with the advisor, we need to answer these things. और I think अगले 2-3 माह के अंदर उस पर क्लैरिटी ज्यादा होगी. Okay.